guys and welcome back to my channel. क्या सही में गोवा ट्रिप के बजट में आप थाईलैंड घूम सकते हो? In this vlog we are going to find out. So last year इसी time पे I did a Thailand trip for 5 nights and 6 days where 2 nights I spent in Bangkok and 3 nights in Phuket. And during this trip I did all the popular activities like visiting beaches, temples, malls, going for the Phi Island tour or the high skywalk in Bangkok, and I did all of it in just 55,000. So in today's vlog, I'm going to help you plan your Thailand trip in just 60,000. So stay tuned and please subscribe to my channel because आगे जाके I'm going to help you plan more such trips in budget without breaking the bank. So I have divided this video into 6 sections, which are flights, accommodation, food, transport, connectivity and activities. But before talking about all these things, I wanted to mention that जब हम थाईलैंड गए थे तब वहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री था, so we did not have to apply or pay anything for visa. And now Thailand has increased, like extended its visa free entry indefinitely for Indians, which is great. तो आपको अभी वीज़ा का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके लिए अप्लाई करना होगा. So coming to flights, Bangkok के लिए direct flights available है from all the major cities in India, and it can cost anywhere between 16 to 22,000 for a round trip, depending on आप कौन से शहर से जा रहे हो and आप किस सीज़न में बुक कर रहे हो और कितने पहले बुक कर रहे हो. I would recommend booking at least 2 months in advance to get better deals. एंड ऑल्सो अगर आप पीक सीज़न में ना ट्रैवल करके शोल्डर सीज़न में ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जांपल इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर और मार्च अप्रैल, जब इतने टूरिस्ट नहीं जाते और इतना बारिश भी नहीं होता है, देन यू विल गेट अ लॉट बेटर डील्स एंड cheaper stays as well. अब इसके अलावा बैंकॉक से फुकेट जाने के लिए भी वी हैड टेकन फ्लाइट्स because it's a lot more convenient and saves you a lot of time. अगर आप overnight बस लोगे for example, then it will cost around 1500 to 2000, but it will also take 10 hours to reach Phuket, whereas flight में अगर आप जाओगे तो वो बस 1.5 घंटा लेता है. So that's why we had chosen to take flights, because we only had 6 days to explore the 2 cities, and yeah, it costed us around 2.5k for one way trip. तो ओवरऑल आपका फ़्लाइट का खर्चा भी आ जाएगा around 28,000, should not exceed 28,000 if you are booking well in advance. Now next up is accommodation. Well, hotels are really cheap both in Bangkok as well as Phuket, and it can cost around, like an average 3-star hotel in a good location in a good neighborhood will cost you not more than 2,000 per night. I will give you one example. This is where we stayed in Bangkok on our first day of the trip, and it had all the facilities, a really big room, a swimming pool and everything that we needed, and it was also in a very good location. And we booked it from booking.com and it costed us 2,100 for a night. So yeah, it's really cheap, really affordable, and in fact मुझे तो लगता है गोवा से भी ज़्यादा सस्ता है accommodation वहाँ पे. And if you are a solo traveler, then you can also opt for hostels. बहुत सारे hostels हैं in both the places, and वहाँ पे भी आपको dorm beds, like one bed in a mixed dorm, it could cost you anywhere between 500 to 800. तो accommodation के लिए भी you won't be spending more than 6,000 like for one person if you are a couple, you are a group or a solo traveler. So that is really great. Now next up is food. So if you are a non-vegetarian, then you won't be facing any issue with food, and you can try the local cuisine, the street food, and you can visit places like Chinatown to try the street food over there. वहाँ पे आपको बहुत varieties मिल जाएंगी, both meat as well as seafood. But हमने देखा था कि वहाँ पे pork and beef are more common than chicken. So अगर आप pork या beef नहीं खाते हो, then sometimes on the menu it's not mentioned, तो order करने से पहले पूछ लेना. But yeah, there's still a lot of options, a lot of things you can try out. And two things from the local cuisine that you need to try are pad thai and mango sticky rice. तो ये 2 चीज़ें ज़रूर ट्राई करना थाईलैंड में जाके. एंड 2 दिन में आपका वही 1000 to 1200 खर्चा होगा ऑन फूड, सो इट शुड नॉट एक्सीड मोर दैन 7k
If you're visiting expensive cafes and restaurants, this cost is going to go up and your overall trip budget is also going to shoot up. On the other hand, अगर आप vegetarian हो, then you're going to struggle a lot because veg options are really limited in Thailand. Like especially in Bangkok, we noticed that vegetarian options almost थे ही नहीं. Uh, you you will rely either on mango sticky rice, or you will probably just have soup, or you will need to visit Indian restaurants. वेल इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, बट हियर्स द कैच, वहाँ पे इंडियन फूड इज़ 3x कॉस्टली कंपेयर टू इंडिया, तो देन योर फूड का खर्चा विल ऑल्सो शूट अप इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन. सो नाउ कमिंग टू कनेक्टिविटी, नाउ दिस इज़ ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट आज के दिन में. Without internet, you won't be able to book cabs, look at Google Maps, or even लोगों को जलाने के लिए इंस्टाग्राम पे फोटोज एंड वीडियोस भी नहीं डाल पाओगे. तो गेटिंग अ लोकल सिम इज़ रियली इम्पोर्टेंट एंड इट्स चीपर कंपेयर टू द रोमिंग पैक्स ऑन एयरटेल फॉर एग्जांपल, राइट. सो लोकल सिम के लिए भी देयर आर मल्टीपल प्रोवाइडर्स, बट वी हैड पर्सनली ऑप्टेड फॉर द ट्रू 5G सिम, जिसमें हमको 10 days के लिए 50 GB डेटा मिला था, एंड ऑल्सो दीज 5 apps वर फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इसके अलावा आपको, अगर आप इंडिया में किसी भी नंबर में नॉर्मल कॉल कर रहे हो, देन आपको 30 minutes तक का फ्री कॉल है हर दिन. सो वी हैड प्री बुक्ड इट ऑन द क्लूक ऐप एंड कलेक्टेड इट फ्रॉम द एयरपोर्ट काउंटर. यहाँ पे हम लोग आ गए एग्जिट में सिम कार्ड लेने, और हमने पहले से ही क्लूक पे बुकिंग कर लिया था, तो देयर इज़ अ 50% डिस्काउंट. यहाँ पे अगर आप प्राइसेस देखोगे, तो हम लोग को मिला था क्लूक में 2 सिम फॉर 850 रुपीज़, एंड वहाँ पे एग्जैक्टली डबल था. तो डू check out the Klook app, and this is like not a paid promotion or anything. I'm not getting paid, but it's really going to help you save a lot of money. अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बोथ बैंकॉक एज वेल एज फुकेट एयरपोर्ट से आपको एयरपोर्ट बसेस मिल जाएंगे, विच आर रियली चीप, एंड इट विल हेल्प यू रीच ऑलमोस्ट ऑल द फेमस लोकेलिटीज़. तो बैंकॉक से हमने कैसे एयरपोर्ट बस अवेल किया था, क्या उसका स्केड्यूल होता है वगैरह, सारे डिटेल्स मैंने इस ब्लॉग में दिया हुआ है, तो यू कैन डू चेक इट आउट. एंड फुकेट से भी अगर आप एयरपोर्ट बस ले रहे हो तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, एंड इट रन्स एवरी 1 hour. तो हमने भी लिया था, एंड इट कॉस्टेड अस 100 baht, विच इज़ रफली 250 rupees for 1 person, बट इट इज़ स्टिल अ लॉट लेस चीपर दैन गेटिंग अ टैक्सी, मतलब एटलीस्ट 5 times cheaper than a taxi. uh, तो एयरपोर्ट बसेस आर अ गुड ऑप्शन, एंड विद इन द सिटी अगर आप कम्यूट करना चाहते हो, देन डू डाउनलोड दीज 3 apps for booking cabs. Grab is the most popular app for booking cabs, but the other two are also there, जिसमें fares थोड़े से कम होते हैं, in fact grabs. Now if you are a solo traveler, then you will also get the option of booking bike taxis from Grab app, which is another really convenient way, and will help you save money. And yeah, इसके अलावा most of the tourist places, at least in Bangkok, are very well connected, like super well connected via metro. तो मेट्रो में भी यहाँ पे 2 options है आपके पास. यू कैन टेक द MRT और द BTS. MRT is the underground metro, whereas BTS is the sky train. तो जहाँ भी आप जाओगे, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि पहले से आप चेक कर लेना कि वो सारे लोकेशंस के आसपास कौन से MRT या BTS स्टेशंस है, एंड दिस विल हेल्प यू प्लान योर ट्रिप बेटर एंड हेल्प यू सेव मनी एज वेल. इसके अलावा इफ़ यू आर गोइंग टू प्लेसेस लाइक वाटररून और आइकॉन सियाम, विच आर situated close to the Chao Phraya River, then you can take the ferry. In fact, I will recommend you to take the ferry because it's a great experience. It's a different experience to take a ferry ride within such a big city, right? And it's also super cheap. This ferry ride to the Icon Siam Mall from the opposite side of the river, it costed us just 25 rupees. Can you believe it? So yeah, you should definitely try ferry ride once at least. And in Phuket, you can easily get a scooty for rent in 500 to 600 rupees like per day.
but the only issue is that you have to deposit your passport, or you have to keep a really high, like give them a really high security deposit, which is the only con in my opinion, and that is why we did not get a scooty. बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप फुकेट अच्छे से घूमना चाहते हो देन डू टेक अ स्कूटी फॉर रेंट एटलीस्ट एक दिन के लिए, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर द आइलैंड प्रॉपरली. So overall transport या commute में भी we never really spend more than 800 rupees per day, because वहाँ पे public transport भी available है, and we also did not take tuk-tuk ride. Tuk-tuks are really expensive, so unless there is an emergency or you are really running out of time, then do not avail tuk-tuk rides. Tuk-tuk drivers will scam you, and yeah, they are even more costly than cabs. So, coming to the last section of the vlog, which is activities. This is where you're going to spend the most money after your flight tickets, obviously, and rightly so, because Thailand has so much to offer that even maybe 2 हफ्ते is also not enough for it. But अगर आप हम लोग के जैसे 5 days या 6 days का ट्रिप प्लान कर रहे हो, then here are my top recommendations for first timers. So first, let's talk about things to do in Bangkok. High up on my list is this skywalk on the tallest building in all of Bangkok. This is made of glass and it's situated on the 78th floor of the King Power Mahanakhon building in Bangkok, which offers an unmatchable view of the entire city. यहाँ से जो view आपको मिलेगा वो और कहीं से नहीं मिलेगा. And yeah, it has a 360-degree view of the entire city, and I will recommend कि आप just sunset से पहले जाओ, so that you get to experience the sunset as well as the night sky, which is really incredible and something that you won't get to see in India. Next, if you are a party animal, then वहाँ से आप सीधा जा सकते हो Khao Road, which is one of the most popular places in Bangkok, and it's famous for its nightlife. And here you don't have to pay any entry fee, and you just can take a beer for 200 rupees and sit at any of the pubs and enjoy the vibes. इसके अलावा in the mornings you can definitely explore the temples. There are so many temples, and वहाँ पे entry fee होता है. It ranges from anywhere between 200 to 500 rupees, but yes, these temples have amazing architecture. It's very different from the temples in India, जैसे कि आप देख ही सकते हो. So it's Tibetan style architecture, and these are some of the famous temples that you can visit. And ये भी आप मोस्टली MRT या फिर फेरी से आप जा सकते हो इन सब जगह पे. इसके अलावा these are some of the other free activities that you can do. So, coming to Phuket now, the first thing on my list is the Phi Island tour. Doesn't matter अगर आप थाईलैंड गए हो या नहीं आए हो, इस टूर के बारे में आपने सुना ही होगा from all the viral reels. And this is a must-do activity for first timers. You will be taken on 6 to 7 spots, and you will also get to do snorkeling. इस टूर के बारे में detailed information मैंने share किया है on this vlog, so do watch it. बट ओवरऑल आप इसके इस टूर के टिकट्स बुक कर सकते हो ऑनलाइन ऑन एप्स लाइक हेड आउट और क्लूक. बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप पटोंग एरिया के आसपास रह रहे हो देन डू गो टू द लोकल शॉप्स, बिकॉज chances are that you are going to find it for a lot cheaper than the prices that you see online. आपको इजीली ये टूर बुक कर सकते हो एनीवेयर बिटवीन 2 to 3K पर पर्सन, डिपेंडिंग ऑन आपके बार्गेनिंग स्किल्स. इसके अलावा अगर आप फीफी आइलैंड में या फिर इन एनी ऑफ द बीचेस इन फुकेट अगर आप वाटर स्पोर्ट ट्राई करना चाहते हो, यू कैन ट्राई लाइक जेट स्की और बनाना बोट राइड. दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 3 to 4,000. एंड इसके अलावा these are some of the must visit places in Phuket. And in the beaches you can do swimming, for example, or you can visit the old Phuket town and go cafe hopping, or you can visit important landmarks like Big Buddha. तो अगर आपके पास स्कूटी होगा then again it's going to be really easy for you to commute. तो अपार्ट फ्रॉम द फीफी आइलैंड टूर वाला दिन
आप 2 दिन के लिए एटलीस्ट स्कूटी ले लेना रेंट पे, देन इट्स गोइंग टू बी रियली कन्वीनियंट एंड cheap also for you, and you will be able to explore the city properly. So we have come to the end of the vlog, and moral of the story, Thailand is not exactly cheaper than Goa, but अगर आप एक better experience चाहते हो, better beaches चाहते हो, and you don't mind adding maybe a 10-20K to your existing budget, then you can definitely visit Thailand. And I hope like this video will motivate you to plan your Thailand trip. I have tried to make it as informative as possible. So do hit the subscribe button, and I will see you next time. Bye.